Greetings, students. How are you? Welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. Now, what were we doing? We were doing the Tale of Melon City by Vikram Seth. Okay, and I have already explained this chapter to you. In this chapter, children, now in this video, we will do question and answers. Okay, we will do question and answers from the end of the chapter as well as the NCRT questions. Okay, so let us move forward. Okay, now these are questions from textbook solved, reading within insight. And question number one, narrate the tale of Melon City in your own words. That means you need to describe the whole tale, right, in your own words, not in the words of the writer. Okay, I hope you know the writer's name, children. It is Vikram Seth. Okay, now the tale of Melon City runs like folk tale, folk purana, traditional tale, story. The city is called the Melon City. ठीक है, मेलन सिटी बिकॉज इट्स रूलर इज अ मेलन. और क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो रूलर है वो क्या है? एक मेलन है. देर इज अ क्यूरियस टेल अराउंड इट. ओके, क्यूरियस बहुत अजीब. ठीक है. Once a fair and gentle king ruled over a state. fair जो just होता है, ठीक है, जो justice में believe करता है. He got an ark built. ark क्या होगा children? ark क्या होगा? It is in this shape. ठीक है, across the thoroughfare. thoroughfare is the main city, right? मेन रोड जो बोलेंगे. एज ही पास्ड अंडर द लो आर्क इट स्ट्रक हिज हेड एंड लॉस्ट इट्स क्राउन. अब क्या हुआ? जैसे वो इस आर्क के नीचे से गुजरते हैं, कौन? किंग. अपना क्राउन लेकर वो गिर जाता है, उनका हेड लगता है और क्राउन नीचे गिर जाता है. ही थॉट इट इज अ डिसग्रेस. और उनको ये लगा ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती है. ठीक है, इट इज़ अ डिस्ग्रेस. एंड ऑर्डर द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड. और फिर क्या बोला कि जो यहाँ के जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं उनको क्या करा जाए? हैंग करा जाए. द चीफ ले द ब्लेम ऑन द वर्कमैन. अब क्या हुआ? द चीफ को पता चला तो उन्होंने क्या करा? बोला कि जिन्होंने बनाया है वो तो उनकी गलती, मेरी तो कोई गलती नहीं है. The workmen were surprised. अब वो काम करने वाले they were very surprised. They said that the bricks were made of wrong size. अब उन्होंने बोला कि जो bricks थे वो बहुत small size की, गलत size के बने थे. So the masons were thought guilty. अब ये सोचा गया कि मेसन की गलती है. The mason shifted the blame on the architect. अब क्या हुआ? मेसन ने क्या करा? किस पे ब्लेम डाल दिया? आर्किटेक्ट के पास. The architect put the blame at the king's door as he had amended his original plan. और द आर्किटेक्ट ने बोला, आर्किटेक्ट कौन होता है? जो डिज़ाइन बनाता है. ठीक है, तो आर्किटेक्ट ने बोला ये तो मेरी गलती है ही नहीं, ये गलती किसकी है? आर्किटेक्चर की है. अब आर्किटेक्चर ने क्या बोला कि मैंने तो किंग को प्लान दिखाया था, तो और किंग ने इसमें अमेंडमेंट की है. अमेंडमेंट मतलब चेंजेस की है. द किंग sought a wise man's counsel. अब किंग ने बोला क्या करा जाए? सब सोचते रहे. तो ये हुआ जो सबसे सिटी का जो सबसे वाइज मैन होगा, सबसे वो बुलाया जाए. ही हेल्ड द आर्क गिल्टी एंड ऑर्डर इट टू बी हैंग्ड. ठीक है, उसने बोला कि नहीं ये तो आर्क की गलती है, आर्क को वो कर देते हैं. अ काउंसलर ऑब्जेक्टेड टू इट एज इट हैड टच द किंग्स हेड. तो बोलते काउंसलर ने बोला कि नहीं नहीं ये तो सब प्योर है क्योंकि इसने किंग का हेड टच कर रहा है. द पीपल बिकेम रेस्टलेस. अब इधर उधर से जोर जोर से बातें होने लगी. तो फिर हैंग कौन होगा? दे वॉन्टेड टू सी समवन हैंगिंग. ओनली द किंग्स हेड कुड फिट. अब वो बोले जिसके वो जो रोप डाली गई और बोला गया कि जो इस रोप तक फिट आ जाए, नूज बोलते हैं. ठीक है, वो हैंग हो गए. ठीक है, सो ही वॉज हैंग्ड. कौन? किंग, क्योंकि किंग का ही हेड उस पर फिट आया. इट वॉज नाउ अनाउंस दैट द नेक्स्ट मैन हु पास द सिटी गेट वुड चूज द किंग. अब ये अनाउंस हुआ कि जो वो आर्क बना था इसके नीचे कोई भी गया तो
वो बताएगा नेक्स्ट किंग कौन होगा. एन इडियट हियर मीन्स फूल, राइट. ही सजेस्ट अ मेलन, उसने बोला एक मेलन. ठीक है. सो मेलन वॉज क्राउन द किंग. He was taken to be to the throne and he called a melon king. Melon, watermelon, right? Or melon or other melons also. The impression would you form of a state where the king was just and placid. ठीक है. तो वो बोल रहे तुम्हारा क्या impression होगा for the king who is just what do you call it, who is just and placid. Placid means calm, who's very calm. The state where the king was just and placid seemed to be the backward region, full of ignorant fool and ruled by a whimsical king. Who's a whimsical king? Children, what do you mean by a whimsical king? Means unusual and not serious in an amusing or annoying way. The king considers him to be as custodian of people and gets an ark erected for his spiritual upliftment. The king's word is a command and unwritten law. The whole process of changing judgment on the appeals of the victim appears as a mock trial. The ministers and counselors seem to be selfish. है ना? They advise the king to serve their own ends, though they appear to flatter the king and seem dedicated to the state. ठीक है. वो बता रहा है कि जो काउंसलर है उन्होंने अपने लिए काम किया, बट ऐसे दिखाया कि वो क्या है, स्टेट के लिए कंसर्न्ड है, वहाँ के राज्य के लिए कंसर्न्ड है, राइट. द कॉमन पीपल आर अनएजुकेटेड, और वहाँ के जो कॉमन पीपल है वो अनएजुकेटेड है. नहीं तो वो क्यों एक फूल को नीचे से आग के नीचे से निकालते. The common people are uneducated and ignorant fool. They need mental as well as spiritual upliftment. They are fun-loving. In their quest for fun, they can cross all limits. है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक राजा तक को फांसी लगवा दी जस्ट बिकॉज उसकी हाइट वहां तक पहुंचती थी, प्लस एक मेलन को किंग बना दिया, राइट. तो दे कैन क्रॉस ऑल लिमिट. तो ये लिमिट क्रॉस करना है. If deprived of fun, the unruly mob means people, group of people, can rebel against the crown. They do not bother whether the king is a man or a melon. उनको ये भी नहीं फर्क पड़ता, उन्होंने बस अपनी फ्रीडम और एक्सेप्ट करना लेजी फेयर के वजह से. दे वॉन्ट their पर्सनल फ्रीडम, फ्री बिजनेस एंड पीसफुल लाइफ. है ना? फ्री बिजनेस मतलब लेजी फेयर. What according to you can peace and liberty be maintained in a state? वो पूछ रहा है, sorry, how according to you can peace and liberty, freedom, can be maintained in a state? Various people advocate various means of maintaining peace and liberty in a state. Some are in favor of dictatorship while others are in favor of democracy. Dictator means one man rule. Democracy where people choose their representatives. है ना? I think the best course lies in good governance. Whether is well administrated is most fruitful for the citizen as well as the rulers. जो बेस्ट होता है वो है वेल एडमिनिस्ट्रेशन. इट इंश्योर्स पीस एंड लिबर्टी टू द कॉमन मैन. आई थिंक द बेस्ट कोर्सेज लाइज इन गुड गवर्नेंस. ठीक है. तो वो बोलते हैं सम आर इन फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप, एक मैन आर्मी में. सम आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि एक आगे जो लोग हैं वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे. आई थिंक द बेस्ट कोर्स लाइज इन गुड गवर्नेंस. बल्कि में ये होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस किसकी है. Whatever is well administered, जो बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर हो वो सबसे फ्रूटफुल होता है फॉर अ सिटीजन एज वेल एज द रूलर्स. It ensures peace and liberty for the common man. Liberty means freedom. A strong state in itself is safe against any external threat. Dedicated rulers, enlightened citizens, and proper law enforcing agency can establish peace and harmony in the states. वो क्या बोल रहे हैं? Dedicated rulers, the rulers who are very hard working, who are dedicated to their common men, enlightened citizen, and proper law enforcing agency can establish peace and harmony in the state.
Narrow considerations based on region, religion, caste, etc., should be discouraged because these are potent threat to internal security, as there were fuel dissensions among the people. Free expression of opinions must be allowed, but respect for law and order be observed. People should be conscious of their privilege and rights as well as their duties and responsibility. This is the only way to maintain peace and liberty. Suggest a few instances in the poet which highlights humor and irony. Humor, funny or ironical, जो दो चीज़ें opposite हो. The Tale of Melon City is full of instance of humor and irony. ठीक है. The just and placid king. Just जो बहुत ज़्यादा justice को मानते हैं. Placid, calm. Got an ark built to edify spectators. Right? What do you mean by edify? Edify means to instruct. Okay. Instruct spectators. The king's riding under low arc and crossing his crown also creates humor. ठीक है, तो वो बोलते हैं मजाक कहाँ पर है, जहाँ पर किंग क्या कर रहा है, राइड कर रहा है अंडर लो आर्क एंड लूजिंग हिज क्राउन ऑल्सो क्रिएट्स ह्यूमर. The way the accused appeal to the king and shift the blame on others is quite funny. और कैसे कैसे करके एक accused दूसरे को बताता है, मतलब एक जो जिसकी गलती है, ठीक है, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, is also funny. The unstable behavior of the king also creates humor. The self-defense of an architect is a masterpiece. He holds the king himself responsible for the disgrace, for the insult, as he had made certain amendments, changes to his original plan. The king's anger and inability to act calmly create humor. Okay? Now, the criteria for selection of the wisest man is quite ironic. Okay? बहुत अजीब. Right? It is assumed that wisdoms come with age. कि ये माना जाता है जो सबसे बूढ़े होते हैं उनका क्या है, उनको सबसे ज़्यादा ज्ञान है. Being blind, he does not know that an ark cannot be hanged. और आंखें वो क्या रहता है, अंदर रहता है, पर फिर भी उसको तो पता होना चाहिए ना कि आंख को तो नहीं कर सकते. Others have eyes, yet they follow his advice and take the ark to the gallows. Gallows is a place where it is hung. और gallow कैसे दिखता है children? Gallow ऐसे दिखता है. Right, where a person is hung, यहाँ पर उसको मार देते हैं. Right, so this is a gallows. How ironic it is. The king wants to keep the crowd in good humor and orders that someone be hanged. Only the king is tall enough to fit the nose. अब वो बोल रहे हैं children कि nose तक fit करने के लिए. What is a nose? It is this point here. ठीक है, दिस इज अ नोज. यहाँ पर फिट करने के लिए सिर्फ किसकी गर्दन आती है, किंग की. What an irony! He says it is an irony. The king is hanged by his own orders. The custom of naming the next king seems equally ridiculous. The idiot means fool, who passes by the city gate suggests Melon to be the next king. क्योंकि वो fool को क्या पसंद था, Melon ही पसंद था. People who think only of their own interests do not bother whether the king is a man or a melon. ठीक है. Now we've more questions, that is short answer questions. What sort of king ruled over the state? Just and placid भी लिख सकते हैं. The king was fair and gentle. What did he proclaim? Proclaim means order. He seemed to be interested in the welfare of the masses. Welfare of the masses मतलब वो सबका भला करना चाह रहा था, अपने सिटी का जितने भी लोगों का. So he proclaimed, he ordered that an ark should be constructed which show extended across the major thoroughfare. Thoroughfare means city. थ्रू अ मेन रोड इन द सिटी. ठीक है, तो उसने बोला कि एक आग क्या हो गया, एक आग कंस्ट्रक्ट करेंगे. ही होप दैट इट विल इम्प्रूव पीपल्स माइंड ऑन लुकिंग एट, क्योंकि वो विक्ट्री का साइन था, ट्रायम्फ का साइन रहता है. हाउ डिड द किंग राइड डाउन द थॉरोफेयर एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? द किंग रोड द थॉरोफेयर टू एडिफाई, to instruct spectators there. Since the
ark was built too low, he lost his crown under it. A frown appeared, an anger expression appeared on his mild face, and he called it a disgrace. Disgrace means very insulting. So it says that what did the king write down? The thoroughfare. Okay, thoroughfare is the path. Okay, the city of the main road of the city. And what was the result? कि उसने अपना crown गिरा दिया था और उसके बाद उसको गुस्सा आ गया था because he thought it was a insult. Who was held responsible for his disgrace? How did he or they react to it? What do you learn about the king? The chief of builders was feel responsible for the disgrace and ordered to be hanged. The chief called it the workmen's fault. The king ordered to have all the workmen hanged. The workmen looked surprised, but they blamed the wrong size of the bricks. This shows that the king's fickle mindedness, मतलब वो उनका कोई डिसीजन फर्म नहीं रहता है, राइट? तो वो सिर्फ दूसरों की बातें जो बोली हुई रहती हैं उनमें क्या करते ज़्यादा ध्यान रहता है, राइट? तो ही कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन हिज ओन. What argument did the architect advance in self-defense? How did the king take it? The architecture reminded the king that he had made certain amendments to the original plans of the architect. ठीक है, तो वो बताता है कि ये तो किंग ने डिसाइड किया था कि क्या होगा. थोड़े अमेंडमेंट्स जो चेंजेस आने थे वो तो किंग ने करा था. ठीक है. He suggested that it was the fault of the king himself. On hearing it, the king became so angry that he nearly lost his ability to act sensible or calmly. मतलब वो बोल रहा है कि इतना गुस्सा किंग को आ गया कि वो भूल गया उसकी काम और सेंसिबल होना, वो सारी चीज़ें वो भूल गया. How did the king need some counsel, and from whom? Do you think the man was really the wisest one? Give a reason for your answer. So the king got confused by the architect's clever self-defense, so he needed the advice of the wisest man in the country. The man selected was so old that he could neither walk nor see. अब उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए कि अब कौन हैंग होगा, क्योंकि वो जज था, लोग बातें करने लगे थे कि उसको ये फिर अच्छा नहीं लगा. तो क्या हुआ, फिर उसने बोला कि एक इंसान लेकर रहो जो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर हो. ठीक है, तो उन्होंने एज पर द एज, बोलते हैं ना स्मार्टनेस कहाँ से आती है या वाइज कहाँ से आते हैं. वाइज एक पर्सन कैसे बनता है, जो बहुत ओल्ड एज का. बट ये जो ओल्ड एज का मैन था चिल्ड्रन, वो ना तो चल सकता था ना देख सकता था. He was not really the wisest man, as wisdom does not necessarily come with age. और फिर वो लिखा, इसमें लिखते हैं कि ही वॉज रियली द वाइजेस्ट मैन. हालांकि वो वाइजेस्ट मैन होगा, बट क्या विजडम, क्या नॉलेज एज के साथ आती है. हिज एडवाइस प्रूव्स टू बी वर्थलेस, क्योंकि वो क्या बोलता है कि किसको हैंग करा जाए, जो आग की, क्योंकि आग की गलती थी. बट अब आग को कैसे हैंग कर सकते थे, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? एंड प्लस हाउ कुड इट बी हैंग्ड, राइट? तो क्या हुआ, उसकी जो एडवाइस थी वो वर्थलेस क्रिएट करी गई. Now let us do the next question. Comment upon the criteria of selection of the wisest man and the quality of counsel he offered. The criteria was that wisdom comes with grey hair. Grey hair means old age. तो wisdom जो knowledge आती है कहाँ से आती है, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हों. द ओल्ड मैन दे सिलेक्टेड कुड नॉट वॉक नॉट सी. और जो सबसे ओल्ड मैन था वहाँ का, वो ना तो देख सकता था ना चल सकता था. ही स्पोक इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, कांपती हुई आवाज़ से उसने बोला. ही एडवाइज्ड, ही ऑफर्ड, the advice he offered was absurd, बहुत अजीब. A lifeless object cannot be deprived of life by hanging it. एक पे जिस नॉन ऑब्जेक्टेबल नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, आग, वो कैसे मर सकता है, वो ऑलरेडी लाइफलेस है. तो ही सेड दैट what an ark should be hanged, right? What did the next question, what does the comment of the counselor about the ark reveal about himself and the king? It shows that the counselor psychophancy and king's capriciousness. Now what is the meaning of psychophancy?
तो फैंसी का मतलब होता है बिहेवियर इन विच somebody praises important or powerful person in a way that is not sincere, especially in order to get something from them. तो काउंसलर क्या थे? साइकोफैंसी थे, मतलब they wanted something from the king and the king's capriciousness. Now what is capriciousness? मतलब एक इंसान का बिहेवियर, चेंजिंग बिहेवियर सडनली इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. ठीक है. द काउंसलर एंड एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लैटरी चेक द किंग फ्रॉम एन एब्सर्ड एक्शन through an argument that appeared logical. The thoughtless king mused over it. Right? Next. Why did the king succumb to public demand? Succumb to stop fighting against something. The king noticed that the crowd of spectators had become restless and people were muttering aloud, talking to each other aloud. He judged their mood, और उसने क्या करा? उनका mood judge कर रहा. He trembled to think of the consequence if they were deprived of the fun of watching someone being hanged. So in order to save his skin, he ordered that someone be hanged immediately. What was the result of the king's thoughtless order? The king ordered that someone be hanged immediately. So the noose is the rope, was set up somewhat high. Each man was measured one by one. Only one man was found tall enough to fit the noose. और वो कौन था? He was the king himself. He was hanged by the royal order. Thus the king paid with his life for his thoughtless order. तो बोलते हैं paid with his life, मतलब he had to give his own life क्योंकि उसने वो चीज़ सोची नहीं. Right? Why did the minister feel relieved? Do you think their elation were justified? The ministers felt relieved that the public's eagerness to watch a hanging had been satisfied. They expressed their pleasure by saying that they found someone for hanging. They believed that if they had failed to do so, the unruly town might have turned against the king. The elation is misplaced. The king had to lose his life to keep the public in good humor, right? So which was wrong? What opinion do you form of the king's minister on the basis of the actions after the king's death? Now the ministers believed in traditions and ceremonies. ठीक है, जो किंग था वो किस पे बिलीव करता था? ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड सेरेमनीज पे. राइट? दे शाउटेड इन वन ब्रेथ, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड. अब ये देखो कितनी आयरॉनिकल है, वो बोल रहे लॉन्ग लिव द किंग बट द किंग इज डेड. दे वर practical minded men. They knew that the throne could not be left unoccupied. The crown being a symbol of power, someone must be crowned as king. So someone must be crowned as a king. Now, what custom of the citizen is referred to in the tale? How did the ministers decide to observe it? Now, it is their custom to choose the new ruler for the state. और उनका एक custom रहता है. क्या रहता है? कि they have to choose a new ruler for the state. Whoever passed the city gate first of all the next day would choose the ruler of the state. और उन्होंने ये करा कि जो इसके नीचे पास करेगा, इस आँख के नीचे पास करेगा और सबसे पहला जो पास करेगा वही चूज करेगा कि किंग कौन बनेगा. This method of random choice excluded dynastic rule as well as conspiracies. ठीक है, conspiracies क्या होते हैं? हम किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पायर करते हैं. कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र बनाना. The ministers decided to observe it with proper formality. Right? How was the new ruler of the state selected? अब वो पूछते हैं किंग कैसे बना. The ministers sent out messengers to declare that the next man to pass the city gate would choose the ruler of the state. अब जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पूरे सिटी में मैसेंजर भिजवाए कि जो इस सिटी गेट के नीचे से पास होएगा उसको क्या करेंगे? किंग बनाए जाएंगे. एन इडियट हैपन टू पास द गेट. अब कौन हुआ पास नीचे से? एक इडियट, फूल.
When asked to decide who was the king, he replied, a melon. और जब उन्होंने पूछा कि किंग कौन बनना चाहिए, उसने क्या बोला? अ मेलन. मेलन क्यों बोला? क्योंकि उसका फेवरेट फ्रूट था चिल्ड्रन, तो इसलिए उसने क्या बोल दिया? अ मेलन. दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन. वो बोलते हैं ये इसका स्टैंडर्ड आंसर था. किस चीज़ के लिए? सारे क्वेश्चंस के लिए. क्यों? क्योंकि द मिनिस्टर्स डिक्लेयर दैट, क्योंकि उसको मेलन पसंद था. फिर द मिनिस्टर्स डिक्लेयर दैट अ मेलन वुड बी अ न्यू रूलर. अब कौन नया रूलर बनेगा? अ मेलन. हाउ डज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अ न्यू रूलर ऑफ द स्टेट रिवील अबाउट द मिनिस्टर्स एंड द पीपल? और देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. हाउ डिड द पीपल एंड मिनिस्टर्स रिएक्ट टू द सिलेक्शन ऑफ मेलन एज अ न्यू रूलर? राइट. The selection process seems quite ridiculous. ठीक है. It also shows how ignorant masses stick to tradition and clever ministers go on be fooling them. वो बोलते हैं कि ignorant masses है जो क्या है, ट्रेडिशनल पे स्टिक करते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको स्टिक करते हैं. बट देखो जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे क्लेवरली लोगों को फुलिश करते हैं. They are some worried about their own peace, freedom, and business affairs than the ruler. So they are more worried about their peace, freedom, and business affairs than the ruler. This shows how selfish, self-centered, and egocentric they are. Who? The ministers are. तो इससे पता चलता है कि कितने सेल्फिश हैं, कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं और कितने ईगोसेंट्रिक हैं. कौन? मिनिस्टर्स आर. ओके. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस डू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके चिल्ड्रन. हाउ डिड द अक्यूज्ड ट्राई टू शिफ्ट द blame on others? How far did they succeed? Now the chief of builders, जो builders का chief रहता है, was the first one to be held guilty. वो सबसे पहला था to be held guilty. He shifted the blame on the workmen. उसने क्या करा? उसने करा कि नहीं, मैंने तो नहीं करा, जिन्होंने बनाया उनको हैंग करना चाहिए, मेरी तो कोई गलती नहीं है. The workmen were surprised but did not lose their reasoning power. ठीक है. तो workers were surprised but still they did not lose their reasoning power. They told the king he had forgotten the fact that the bricks were made of the wrong size. तो वो बोलते हैं कि जो चीफ वर्कर है वो भूल गया है कि जो ब्रिक्स हैं वो रॉन्ग साइज के बने हैं. Sought by their rational argument, the masons were summoned. अब किसको बुलाया गया? मेसन, जिसने ब्रिक्स बनाई थी. They trembled with fear but shifted the blame on the architect who was responsible for प्लानिंग एंड इरेक्टिंग द आर्क. वो ना इस बात को लेकर कि हमें किसके पास जाना पड़ेगा? किंग के पास. वो कांपने लग गए और वो कहाँ शिफ्ट हो गया? किसके सामने शिफ्ट हो गया चिल्ड्रन? आर्किटेक्चर. द किंग ऑर्डर द आर्किटेक्ट टू बी हैंग्ड. अब किंग ने क्या ऑर्डर दिया? कि आर्किटेक्ट शुड बी हैंड. द क्लेवर आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट ही हैड फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग. अब जो आर्किटेक्ट बहुत इंटेलिजेंट था, उसने बोले कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी गलती है. ही हैड मेड क्लेवर अमेंडमेंट्स. ही हैड मेड clever amendments. Amendments means changes. Who had made? The king had made. ठीक है. तो amendments means change to plans when the former had shown them to the latter. This clearly meant that he held the king responsible for this mishap. The king became very angry and lost his capacity of clear judgment. We called it a tricky thing and sought the advice of the wisest man in the country. So he called it a tricky thing. बोले ये तो बहुत ज़्यादा अजीब tricky हो चुकी है. So we will go to a wisest man of the country. Thus each accused succeeded in shifting the blame on others. Now each of them accused each other and even succeeded in shifting the blame onto others. Okay children? What impression do you gather? It says, what impression do you gather
अबाउट द किंग फ्रॉम द टेल ऑफ मेलन सिटी. तुम्हारा क्या इम्प्रेशन होता है किंग के बारे में? द जस्ट एंड प्लेसिड किंग appears quite ruthless as he become placider and decides to have all the workmen hanged inside इंस्टेड ऑफ चीफ बिल्डर. तो वो बोलते जो जस्ट और प्लेसिड थिंग का काम था वो काफ़ी रूथलेस हो गया था, क्योंकि उसने क्या करा, ही बिकेम काम, कि क्या हो गया, किसको हैंग कर दिया जाए, बिल्डर्स को. हिज वॉबलिंग माइंड एंड कॉपरेशियस नेचर इज इंडिकेटेड बाय फ्रीक्वेंट चेंजेस इन हिज डिसीजन. फ्रीक्वेंट चेंजेस जो बहुत चीज़ों को बदलता, अपने डिसीजन को बहुत ज़्यादा बदलता रहता है. ही इज easily swayed by arguments and seems fickle minded. Fickle minded जो एक तरह स्थिर ना हो, right? He seems to be eager about public welfare and gets an arc constructed across the thoroughfare to edify them. So he says that he seems to be quite eager about public welfare. ठीक है, तो वो सबका भला चाहता है. एंड गेट्स एन आर्क कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, थ्रू द मेन road of the city. The whimsical king is easily outwitted by the clever architect. The king loses his head in a fit of anger. ठीक है, in order to save his skin, in order to save himself बोलते हैं, he seeks the advice of the wisest man in the country. और वो कौन रहता है? The old man. The king wants to keep the public in good humor. He's quite observant and judges the mood of the masses correctly. The lack of foresightedness, दूर तक जिसका व्यू, जिसकी जो नज़रिया है बहुत ज़्यादा आगे तक बोला जाए, proves to be his doom. The height of the nose fits only his neck. Nose means that what do you call it? Rose. That rope, right? He foolishly becomes the victim of his own order, right? He wants to prevent a public revolt, but pays for the public amusement with his blood. Thus, he is a short-sighted cran with muddled reasoning power. What do you think makes the Tale of Melon City interesting and edifying, right? As the title indicated, the poem tells a story about a melon city, a city named after its ruler. It is quite interesting and edifying to learn how the country got a melon as its ruler, है ना? तो it is quite interesting to learn कि हमें कैसे एक melon मिलता है as a ruler. In short, it was on account of customary choice. Right? The people relate the story of a just and placid king who was hanged by his royal decree. The people relate the story, ठीक है, to a just जो justice करता हो, placid बहुत calm हो, was hanged by the royal decree. What the king did for the people and how he held the trails for the accused both are quite amusing, both are quite shocking, and they are very surprised. The clever arguments of the accused to save their lives are equally interesting. और कैसे अलग अलग लोगों ने अपनी लाइफ बचाई सिर्फ एक what do you call it, arguments के लिए. The king feels the pulse of the people who wants to see a hanging. बट किंग ने क्या देखा कि लोग क्या चाहते हैं, कि वो क्या चाहते हैं कि किसको, किंग को या किसी और को, कोई भी तो हो जो हैंग कर दिया जाए. किसी की भी तो गलती होनी चाहिए कि जो आग छोटा बन गया. तो क्या हुआ, किंग ने ये देख लिया और वो उसने क्या चाहा कि कोई ना कोई इसमें हैंग हो जाए. ही नो हाउ मिस्चीवियस एंड एंग्री मॉब कैन बी. ठीक है, मिस्चीवियस एंड एंग्री मॉब मीन गुस्सा वाला जो लोग रहते हैं, कैन बी, एंड हेंस ऑर्डर्स दैट समवन मस्ट बी हैंग इमीडिएटली. और सबको बोलते हैं कि सबको बता देते हैं कि कोई ना कोई इसमें हैंग तो होना ही है. The irony of the situation is that only the king is tall enough to fit the nose. The irony क्या रहती है कि only the person who fits the nose will be hanged. और वो कौन रहता है? Only the king. ठीक है. The practical minded minister resort to the age old custom to choose the next ruler. ठीक है, अब
The practical minded ministers resort to age old customs to choose the next ruler. The idiot's choice is approved with of is in the name of custom. तो custom के accordingly एक idiot, एक fool. The people are indifferent to the fact that their ruler is a melon, not a man. Or they are very indifferent about the fact कि उनका जो रूलर है वो एक इंसान नहीं बट एक क्या है, मेलन है. द बिहेवियर ऑफ pragmatic ministers and equal selfish, foolish and mean people seems quite funny and interesting. It is instructive too. A wise man should avoid the company of fools. तो क्या लिखा गया है, a wise man जो intelligent है, he should avoid the company of fools. Okay, next question we have. The poem mocks the process of fair trial and proper judgment. How far do you agree with the statement? ठीक है. The poem is a severe indictment of the old age custom of delivering just by word of mouth of the kings. तो इसमें क्या है, जो ओल्ड एज में बताते ना, जो किंग ने बोल दिया वही सही है. ठीक है, उस कस्टमी को आज तक कैरी कर रहे थे. देयर वॉज अ टाइम व्हेन किंग्स वर्ड वॉज कंसिडर्ड डिवाइन एंड वॉट एवर ही अटर्ड वॉज लॉ. एक टाइम था जहाँ पर किंग की जो वर्ड होते थे वो डिवाइन कंसिडर होते थे और जो उन्होंने बोल दिया वही उनका लॉ हो गया था. A just and placid king was expected to protect the innocent and punish the quality. ठीक है. However, the process of trial and the trial होना चाहिए and ever changing judgments make funny of the whole process of fair trials and considered awards. This is evident from the statement of accused who tried to save their lives by holding others responsible for guilty. तो others को क्या बताने हैं, responsible. The king's capricious and inability to see through the thin veil of their arguments make him an object of ridicule rather than dispenser of divine justice. ठीक है, उसकी बेवकूफ़ी, किंग की बेवकूफ़ी और किंग की क्या है, अपने डिसीजंस पर फर्म नहीं रहने पर क्या होता है, उसी की hence he agree hilly with the above statement. Hence we agree hilly with the agree with the above statement. Comment on the ending poem, The Tale of the Melon City. What bearing does the ending have on the title of the poem? Comment on the title of the poem, The Tale of the Melon City. Now we have to comment on this. The ending of the Tale of Melon City is quite significant. It has direct bearing on the title. The ending of the poem reveals that incidents took place long ago. It throws fight on the odd customs of the state to choose their new ruler. Confronted with dilemma, the ministers took the easy way out. तो जो उन्होंने क्या करा, चूज करने के लिए easy way out करा. The person who passed the city gate was the name was to name of the king. और जिस जो पर्सन ने सिटी गेट जो आके नीचे चला गया उसको क्या करना है, उसने किंग बताना कि नेक्स्ट किंग कौन होगा. It happened to be an idiot, a fool, who gave the standard answer, a melon, to every question. So the melon was crowned the king. Carried to the throne and respectfully set down there, the people are not at all ashamed to have a melon as the king. The people are not at all ashamed. They say that if the king rejoices in being a melon, that's all right with them. ठीक है? They find no fault with him as long as he lives them to enjoy their peace, freedom and free trade. ठीक है, तो उनको वो हैप्पी हैं कि उनको क्या है, इंजॉयमेंट मिल रहा है, उनको पीस मिल रहा है, उनको फ्रीडम मिल रहा है, लिबर्टी मिल रही है. The capital city is called Melon City after the king. तो capital city क्या है, Melon City. Thus the ending throws light on selfish nature of the people and their belief in old custom. This also explains the title. Okay, children, I hope you can understand. You understood all the questions and answers. And thank you, children. Please like, subscribe, and
comment on the video. Thank you, children. Thank you so much.